Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 31st of May. The first news, PM Care benefit for the COVID orphans. Second, Supreme Court uphold rule for the foreign medical student. This is with regards to the special students who have returned from the Ukraine. Third, monkeypox won't turn into a pandemic. This is what WHO expert has to say. Fourth, what is West Nile virus and its spread? The last is an editorial. Needed education data that engage the poor parents. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we are glad to announce that Apti Plus has backed 41 selection for this year. These are our top rankers among top 100. And the legacy for success has continued for the Apti Plus Academy for the Civil Services. There are many interviews, mock interview that we have uploaded on our website. You can check out. These interviews would definitely help you to get you in a guiding factor, and it will aid you through your preparations. The first news, that is PM Care benefit for COVID orphans, important for General Studies Paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of population by the center and the states. So the Prime Minister has recently released benefits under PM Care for child who lost their parents due to COVID-19, right? So there are other provisions upon which the government will be deciding कि किस तरह से हर बच्चे को benefits देनी है. कई ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स कोविड-19 के इन्फेक्शन से डेथ हुई है. कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक सिंगल पेरेंट्स की डेथ हुई है. So accordingly, government would be working on that. So the Prime Minister has transferred the scholarship to child and handed over a passbook by name as PM Care for Child and health card under the Ayushman Bharat, which is a Pradhan Mantri Arogya Yojana. So this is something very important in an overall holistic development of the healthcare in our country. So PM Child Care Scheme की अगर बात करें, so the PM Child Care Scheme was launched by the Prime Minister on May 2021, and it aims to support those child who have lost their parents, legal parents या फिर उनके जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, सर्वाइविंग पेरेंट्स हैं, इनमें से किसी को किसी ने लॉस किया है, उसकी compensation government करेगी, and government would be taking care of them, right? So the Prime Minister said that if someone need an education or loan for any purpose or a professional course, that would be given by the government, और जो higher educations हैं उनके लिए भी दी जाएंगी. So these are some of the benefits that would be given to these children. And 4,000 have also been arranged for every month throughout the scheme. अगर वैसे बच्चे हैं जिनकी जो ज़रूरतें हैं एजुकेशन की सारी चीज़ों को पूरे करने के लिए 4,000 रुपीज़ गवर्नमेंट देगी उनके पेरेंट्स को, जिनके जो भी पेरेंट्स डेथ होने के बाद जो भी नेक्स्ट पेरेंट होंगे, इमीडिएट पेरेंट्स होंगे, उनको ये पैसे मिलेंगे. The scheme offer a lump sum of 10 lakh rupees when a child turns to 23-year-old and a monthly stipend with the age. So accordingly गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया कि जो बच्चे अगर 23 ईयर्स तक हो जाए तो उनको कम से कम 10 लाख रुपए तक का सरकार से मदद मिले, और अकॉर्डिंगली दिस अमाउंट वुड बी बाइफर्केटेड ऑन अ इक्वेटेड मंथली स्टाइपेंड दैट वुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्टिव क्या होगी इस स्कीम की? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू इंश्योर द केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन अ सस्टेन मैनर बाय प्रोवाइडिंग देम बोर्डिंग एंड लॉजिंग. तो खाने की सुविधा और रहने की सुविधा ये दोनों बच्चों को दी जाएगी. एम्पावरिंग देम विद एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप and equipped with a self-sufficient existence with the financial support of 10 lakh rupees while they attain 23 year of age. तो 23 years के एज तक में गवर्नमेंट ने कोशिश की है जो भी बच्चे इनरोल हो उनको उस समय तक कम से कम 10 लाख रुपए तक की एड मिले गवर्नमेंट की तरफ से. Now online portal for children was also created. An online portal by the government was launched to register for the children, and the portal is a single window system which will facilitate the approval process for all other assistance that is required by children. PM Care Fund की अगर बात करें, I think most of you must be aware of this fund. This was a debatable news that was there. So in March 2020, the Prime Minister
has come up with the Prime Minister's Citizen Assurance and Relief Emergency Situation Fund, which is also known as PM Care Fund. And this was set up to tackle the distress situation that was arises because of the COVID-19 pandemic. And the fund received the voluntary contribution from individual organization and did not get any budgetary support. तो इस allocations में कोई भी budgetary support government ने नहीं दिया. Donation has been made tax exempted and can be counted against company corporate social responsibility also. जो CSR की obligations हैं उनके अंदर भी अगर कोई company contribute करती है तो वो CSR की contributions मानी जाएगी. Now, the PM Care Fund helped in lot in preparing the hospital, buying ventilators, setting up oxygen plant during the pandemic. We have seen the fund were utilized, and substantially many development work has also taken place in terms of the healthcare sector. So this is an infograph to get you idea जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसकी एक रिविजन कर सकते हैं पॉइंटर फॉर्मेट में. So what is PM Care for Children? This is the government stand with children who have lost their parents और उनको अमाउंट मैंने आपको बताया 23 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं 10 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी. फ्री एजुकेशन होंगे उनके लिए एंड इवन दे विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज़. So this is what the government has come up with. You can take the screenshot of this as well because the data that I've collected is from the PIB. So these are some of the authentic information. Second, Supreme Court uphold rule for foreign medical student, important for general studies paper 2, issues related to development and management of education and human resources. So recently, the Supreme Court has upheld the National Medical Commission regulation जो prescribe करती है कुछ stricter norms before any foreign medical graduate can practice in India. So there are precise all rules and regulation that is there before any MBBS degree or any candidate who has pursued his or her MBBS from foreign university need to just get through the examination और कुछ जो regulations हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल के वो पूरे करने होते हैं. सो द कोर्ट हैज नोटेड दैट ओवर एम्बिशियस पेरेंट एंड एक्सप्लोरेटिव फाउंडिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट can cause the decline of commercialization of the medical education. That can even lead to the commercialization. This is what the Supreme Court has quoted. And the regulation had in recent past point out the debate over the Indian student that has especially returned from the Ukraine during the ongoing war which has escalated between the Russia and Ukraine. Now, coming to the regulatory validity की अगर बात करें, so the bench was headed by Aman Gupta versus V. Abhiswanim. In the judgment, it has said that ये judgment पहले की है जहाँ पे ये upheld किया गया that regulatory जो validity है national medical commissions की with regards to the foreign medical graduate licensing की बात की जाएगा and national medical commission for the compulsory rotating medical internship. So इन दोनों को कोर्ट ने वैलिडेट किया है और कहा है कि इस प्रोविजंस को मैंडेटरी मानना जरूरी होगा. सो व्हाट इज नेशनल मेडिकल कमीशंस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन? ये रेगुलेट करती है मेडिकल जो फॉरेन के ग्रेजुएट्स हैं उनको और इवन एक मिनिमम क्राइटेरिया ये रखी गई है कि 54 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी वैसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने फॉरेन से अपनी BBS की डिग्री पूरी की है एंड अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ in the same foreign medical institutions. This is how the things will move ahead. And to register with the professional regularity, the body condemned to grant license in the same foreign country and further undergo a supervised 12-month internship in India after applying for the National Medical Commission. So एक due process जो है National Medical Commissions की जो rule और procedures है उनको बिना complete किए हुए कोई भी foreign medical graduate इंडिया में practice नहीं कर पाएंगे. Now, what is West Nile virus and how does it spread? Very important news that is going to be relevant for your prelims examination also. Mains के लिए काफी relevant है और आने वाले upcoming prelims examination के लिए भी. So this is important for general studies paper 2, issues related to development and management of health. So recently केरला के health department में एक alert release की गई है जहाँ पे एक 47-year-old टिशू डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे वेस्ट नाइल के वायरस पाए गए हैं एंड दिस वाज अर्लियर आल्सो व्हेन दिस वायरस वाज डिटेक्टेड in 2019 6-year-old boy from Mamallapuram had died because of the same infection. So this is kind of a caution that government of India need to take because we have seen coronavirus pandemic. That virus was so lethal that it has led to the lockdown in the entire country. Now these type of virus is evident for a humankind, but again precaution is essentially required.
क्या है वेस्ट नाइल वायरस? सो वेस्ट नाइल वायरस इज मॉस्किटो ब्रोन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. किस तरह की वायरस है ये? आरएनए वायरस है. And it is a flavivirus related to the virus which cause St. Louis encephalitis, Japanese encephalitis और येलो फीवर. तो ये वायरस ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो इन तीनों डिजीज को कैरी करती है. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस की अगर बात करें, क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो जो है, एक स्पीशीज है मॉस्किटो की जो प्रिंसिपल वेक्टर मानी जाती है ट्रांसमिशन को लेकर. एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय infected mosquito between the human and animal, including birds, which are the survivor host of the virus. I will give you a picture. ये पिक्चर्स आपको क्लैरिटी होगी किस तरह से ये होते हैं. सो रिजर्वायर होस्ट की अगर बात करें, बर्ड्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिजर्वायर होस्ट होते हैं, खास करके वेस्ट नाइल वायरस के. ये बर्ड से मॉस्किटो पे आते हैं. एंड अगेन it transmitted to this, like accidental host में people और animal पे जाते हैं. And this again the mosquito, that is Culex mosquito, it again can transfer from mosquito to bird. So this is how bird से mosquito, फिर mosquito से bird की तरफ ये transmissions होती हैं. And this is something which is also causing problem for the humankind and to the animals. Spread of virus की अगर बात करें, mosquito become infected when they feed on the infected birds which circulate the virus in the body, and even the virus eventually get into the mosquito salivary gland. Now, during the later birth meals, it has been said that the virus may inject into human and it can multiply and possibly cause illness to the human. West Nile virus can also spread through blood transfusion. Any sort of blood transfusion can lead to the spread of this virus. Symptoms क्या क्या हैं? Basically जितने भी लोगों को इन्फेक्शन होती है उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं. रेस्ट के पास कुछ सीवियर फीवर होती हैं. बाकी 20% ऑफ सिम्टम्स लाइक इंक्लूड फीवर, हेडेक, फटीग, बॉडी एक, नोजिया, रैश एंड शॉलन ग्रास. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम्स दैट इज विटनेस अंडर दिस फीवर. डिटेक्शन कैसे होती है और क्या क्या चीज़ डिटेक्ट हुई हैं अभी तक? द फर्स्ट वायरस वॉज फाउंड इन अ वुमेन इन वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट इन युगांडा, जहाँ से इसकी फिर नोमेनक्लेचर दी गई वेस्ट नाइल वायरस. एंड नील वायरस की अगर बात करें, दिस वाज अ पैथोजन विच वाज वेनुलेटेड स्ट्रेन. Also found that some of the people died in Israel because of this virus, right? And this was also found in Israel, Tunisia. This has reached to the New York और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और वेनेजुएला में भी इसकी प्रेजेंस देखी गई. अकॉर्डिंगली WHO ने इस इन्फेक्शंस को एट्रीब्यूट किया कि ये आने वाले समय में और भी कंट्रीज़ में फैलेंगी. So now it is evident that this is expanding. So today the virus has found in Africa, Europe, Middle East, North America and West Asia. इंडिया में अगर बात करें जो वेस्ट नाइल वायरस है उसमें इंडिया की कहाँ तक अभी तक इन्फेक्शन रेट किए गए, ओनली मैं आपको बताया हूँ कि जो साउथ के स्टेट्स वहाँ पे काफ़ी है. एंड सम अदर स्टेट्स वर ऑल्सो इन्फेक्टेड. सो दिस इंक्लूड मुंबई में 1952 में ऑलरेडी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं. एंड कुछ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ मॉस्किटो वाज फाउंड, जैसे क्यूलेक्स विश्नोई, ये मॉस्किटो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है एंड तमिलनाडु. एंड अदर इज क्यूलेक्स क्विनक्यूसो facutus mosquito. This was found in Maharashtra and this has also infected some people in Karnataka. Now illness की अगर बात करें, बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे राजस्थान, मराठवाड़ा, Kandesh district of Maharashtra, they have seen fiber illness and encephalitis case because of this endemic. So this is severe. India has already witnessed, but this is the time that during this pandemic जो कि अभी इंडिया ऑलरेडी रिकवर कर रही है, इस टाइम पे ऐसे कोई भी डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा डेक्रीमेंटल होंगे और हमारे हेल्थ सिस्टम को बर्डन करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नाइल डिजीजेस, किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट है? स्टिल देयर इज नो फाइसल एक्सेस और ट्रीटमेंट अवेलेबल, कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए. एंड नो सपोर्टिव ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू द न्यूरोसाइंस WNV, दैट इज वेस्ट नाइल वायरस पेशेंट्स. और हेल्थ अथॉरिटीज़ का कहना है दैट प्रोटेक्शन इज द ओनली वे आउट. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स की यूज़ कर सकते हैं. एंड इवन हेल्थ डिपार्टमेंट नीड टू इंश्योर द रिडक्शंस ऑफ द ब्रीडिंग नेस्ट. जो मॉस्किटो के वेक्टर्स हैं उनकी ब्रीडिंग नेस्ट को कम करना और अपने घर के आसपास में मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना होने देना, दैट इज़ द ओनली प्रिवेंटिव वे. इवन माई सजेशंस, इट इज़ स्प्रेडिंग इन इंडिया टू सम एक्सटेंट, कुछ रेस्ट्रिक्टेड जगह पे हैं, बट यू शुड ऑलवेज यूज मॉस्किटो नेट ड्यूरिंग द समर टाइम ऑल्सो. नाउ एक और न्यूज़ मंकी पॉक्स से रिलेटेड है. मंकी पॉक्स इज देयर इन द न्यूज़ और ये दो ऐसे न्यूज़ हैं साइंस से रिलेटेड.
जो आपके आने वाले मेंस में भी काफ़ी रेलिवेंट हो सकते हैं। तो WHO ने कहा है कि ये ऐसी मंकी पॉक्स अभी एंडेमिक या फिर वैसे कंसर्न की कैटेगरी में नहीं है, बट अगेन वी नीड टू टेक अ कॉशन। इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2, issues related to development and management of health. So the World Health Organization has said that the monkeypox it does not expected to have 100 of cases reported, और ये अभी पेंडेमिक की कैटेगरीज में नहीं आ सकती। At the moment, experts are concerned about the global pandemic, and if an individual acquired the infection or the high risk of exposure, do not have information whether they need protection to protect themselves or not. बट यहाँ पे ये जो ये इन्फेक्शियस है दैट इज नॉट दैट लीथल, राइट। जिस तरह से कोविड-19 की लिथैलिटी थी उतनी लिथैलिटी मंकी पॉक्स वायरस में नहीं है। सम केसेस दैट वर रिपोर्टेड, सो लास्ट वीक WHO said that 23 countries have reported this virus and almost for the entire globe we reported 250 cases. कुछ केसेस यूके में रिपोर्ट किए गए हैं, 71 केसेस हैं वहाँ पे, और भी यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज है जहाँ पे cases report हुए हैं, and even for some part of Western Africa where the cases were reported. Potential risk की अगर बात करें, the expert has warned that anyone in the potential risk of the disease regardless of their sexual orientation can get it, because यहाँ पे ये जो actually monkey pox के जो cases देखे गए हैं वो accidentally वैसे patients में भी हैं जो gay हैं, bisexual men हैं. These were basically the group which were found that these group were other the group if not curbed, right? तो इन लोगों को भी काफ़ी susceptibility होती है इस तरह के वायरस से, and monkeypox is known to spread their close physical contact with the infected person, even their clothes and bedsheet. तो ऐसे individual जो infected हैं, क्योंकि pox में basically होती क्या है, जो pimples होती हैं, liquefied pimples होती है, उसके discharge के बाद वो clothes आपके bedsheets में लग सकती है, जिससे वो infection किसी और दूसरे को भी infect कर सकती है. So this is the reason infected person के clothes और bedsheet भी share नहीं करने होते. Now this is how it actually has been spread out. देख सकते हैं कनाडा में केसेस कितने रिपोर्ट किए हैं, कनाडा से, फॉलोड बाय जर्मनी, देन यूके, पोर्टुगल, स्वीडन, फिनलैंड, यूएई, स्पेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, ये सारे कुछ केसेस हैं. टोटल अभी 434 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं. सस्पेक्टेड केस की अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्पेन में है, देन फॉलोड बाय कनाडा, नीदरलैंड, ईरान, फ्रेंच गुनिया, इटली एंड बोलाविया. ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं. These are the list of the country where number of cases is less comparatively. Moving to the editorial of the day, needed education data that engage the poor parent, important for general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. So I'll be simplifying this editorial by 3 important subheads. First is the case of Rajasthan. This is case study kind of. Balance your objective, the right data. जो थीम है इस पूरी एडिटोरियल की, सो इट टॉक्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड द चैलेंजेस. सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए गए हैं इस एडिटोरियल में. फर्स्ट, व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ अ पुअर कैन नॉट रीड और राइट, सो व्हेन दे डू नॉट हैव डांस इन द स्कूल और दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, तो क्या किस तरह की डिमांड या किस तरह की चेंज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या वो बच्चे किस तरह की चेंज की रिक्वायरमेंट को मांगे अपने स्कूल अथॉरिटी से, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. ना वी गैदर सम इनरोलमेंट, यहाँ पे ये कहा गया है कि एक कलेक्शन से एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और एक सर्वे की गई जहाँ पे रिटेंशन, लर्निंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों को पब्लिक स्कूल में समझने की कोशिश की गई कि एक्चुअल में इंडिया की क्या स्टेटस है. सो द बट बिग डेटा इज इनफ टू इंस्पायर अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज. तो जो सर्वे हुई उससे ये पता चला कि कुछ ऐसे बेसिकली एसेंशियल ज़रूरतें हैं जो स्कूल सिस्टम में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है. सो एक एग्जांपल है राजस्थान, वेयर इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019, राजस्थान वाज अमंग द बॉटम 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लेवल, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे की अगर बात करें राजस्थान वर अमंग द टॉप परफॉर्मर्स. नाउ अगर पब्लिक report on basic education, जिसको प्रोब भी कहते हैं, इन इंडिया की बात करें, 1990 which highlight very poor states of government, school infrastructure and shocking Indian education community in India. So कुछ ऐसे ऑलरेडी सर्वेस किए गए हैं इंडिया में जहाँ पे इविडेंटली ये हाईलाइट किया गया है कि कहाँ पे क्या बॉटलनेक्स हैं, बट अगेन उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी चैलेंजेस है.
वन फॉर्म ऑफ अ विजन की बात की गई है. सो अ नेशनल लेवल इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ इंस्पायरिंग एजुकेशन. आइडियली it should encompass the essence of vision for the people, and the vision will manifest identifying the national, state or district level. तो एक hierarchy पे काम करने की जरूरत है, where we need to work from the ground till the top. तो village, panchayat, block, district, states and then the top. So presently there are no vision of education below the national level, at least in terms of engaging the marginalized. तो अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने national education policy लाई है, this is for 2020, we do not have any specific policy for the states or for the district level. उसकी जो implementations हैं, that has to be proper, and ultimately जो beneficiaries हैं उनको उसके benefits मिलने चाहिए. बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव की बात की गई है. सो लोकली रूटेड जो एजुकेशन सिस्टम है वो that has emerged from the social and political consensus with a need for the school education. School education is something which is inevitable for the growth of our overall country. तो ये विजन रखी गई कि जो लोकल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, इवन द सेंट्रल पार्ट ऑफ लोकल पॉलिटिक्स will form a community where they will call for balancing objective in terms of promoting the educations. On the other hand, schooling की अगर बात करें, ये एक immediate इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों को समझने में, लाइवलीहुड के क्या रेलेवेंट नॉलेज होने चाहिए, किस तरह से रेलेवेंट स्किल्स ज़रूरत हैं ताकि बच्चे अपने आने वाले भविष्य को अच्छा कर पाएँ. तो ये सारी चीज़ें स्कूलिंग से ही पॉसिबल हो पाएंगी. ऑन अदर हैंड, there's an abstract objective such as peer connection, negotiating social diversity, curiosity for new knowledge and experiences. So school is called learning temple. It has a potential where it can inculcate a mind of curiosity for the students, where they can learn a lot more ideas and even inspire for the other people as well. Now the right data की बात की गई है. Social welfare is about the people, जहाँ पे उनकी participation simple, intuitive और energetic होने की ज़रूरत है. Now, if the right system of governance and authority is designed, we can engage in making them available, और poor को जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जानी चाहिए. Even you have seen recently in the news that in Bihar, one boy has approached chief minister that he was not getting adequate education, right? और बाद में ये पता चला कि वहाँ पे education actual में काफ़ी poor थी. The teachers were not known about the subject. The concerned teacher were actually not aware of the basics also. तो जब ऐसे टीचर्स होंगे तो फिर जो इस स्कूल की पूरी एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से दुरुस्त होगी, एंड हाउ इट कैन इम्पार्ट एन गुड एजुकेशन टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स वुड अगेन बी अ डाउट, राइट. तो वी नीड टू लुक इनटू डेटा जहाँ पे लोकल विजन्स ऑफ एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है. जो लोकल एक्टर अकाउंटेबल्स हैं, दैट शुड ऑल्सो बी देयर, एंड मच एज वन वी हैव राइट, वी नीड टू फोकस ऑन नेशनल लेवल ऑल्सो. तो ये ज़रूरत है कि ब्लॉक लेवल पे काम हो, एक हायरार्की लेवल पे काम हो, where we need to see from, this is always have a bottom up approach. Bottom up approach के साथ काम करने की जरूरत है. Then only it is possible that we can complete the entire education system holistically, और उसकी जो growth है वो एक umbrella growth की तरह पे मानी जाएगी. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question also, the correct option is C. Today's MCQ आपको बताना है ILP के बारे में. करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से. ILP is issued by the Union Home Ministry and it is a system it is imposed in northeastern state of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur. रिसेंट में गवर्नमेंट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट से आसपा को और इन विड्रॉ किया था, तो उस कंसर्न में इन लाइट परमिट के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. डू चेक इट आउट फॉर द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड, COVAX program. COVAX program is led by Vaccine Alliance Gavi and the World Health Organization in coalition for epidemic preparedness innovations. And the aim of this program is to ensure equitable distribution of COVID-19 vaccine globally. So this can again be important for the upcoming prelims. तो जो भी correct options हैं आप देखिए, Google search करें and check out for the correct option. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.